फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑफ 1789, इसकी लीगेसी क्या थी? What were its effects on the whole world? How did the revolution of 1789 in France influence the world? फ्रांस की राज्य क्रांति जो 1789 में हुई, उसने पूरी दुनिया को क्या दिया या कैसे प्रभावित किया, इस पे हम लोग थोड़ी चर्चा अभी करेंगे. We have seen in this chapter from 1789 to 1815 the Battle of Waterloo. और इतना सारा पढ़ने के बाद हम लोगों ने पाया क्या कि फ्रांस में जो एब्सोल्यूट मोनार्की थी लुई 16 की, बॉर्बन डायनेस्टी की, उसके अगेंस्ट में पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस और कई और फैक्टर्स के कारण रिवॉल्यूशन हुआ. फोर्ट्रेस ऑफ बैस्टिल पे कब्जा हुआ रिवॉल्यूशनरीज का. 1791 में फ्रांस में एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इस्टेब्लिश हुई. 1793 में लुई 16 और उनकी वाइफ मैरी एंटोइनेट को गुलेटिन पर चढ़ा दिया गया. फिर रेन ऑफ टेरर आया मैक्सिमिलियन रॉबespierre का. उसके बाद डायरेक्टरी का रूल आया. फिर नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का एम्पेरर डिक्लेयर किया 1804 में, और 1804 से लेकर 1815 तक नेपोलियन बोनापार्ट ने पूरे यूरोप को डोमिनेट किया. इतना सारा पढ़ने के बाद जब हम लोग काफी बारीकी से एनालाइज करते हैं तो ये पाते हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 was very, very rich in its legacy. The legacy of the French Revolution of 1789 was of big importance, or rather you can say the legacy of the French Revolution of 1789 is of big importance. इसने दुनिया को बहुत कुछ दिया, दुनिया को बहुत तरीकों से इन्फ्लुएंस में लाया या प्रभावित किया, यूरोप को भी और पूरे वर्ल्ड को. When we analyze everything in the chapter, we find there are 5 points of legacy of the French Revolution of 1789. We'll put all 5 points one by one. Legacy number 1. The French Revolution of 1789 spread the slogan of equality, liberty and fraternity in France, in Europe and in all the parts of the world. Point of legacy number 2. The Revolution of 1789 in France gave the idea of nation and nationalism. France emerged as the first modern nation state in the world. With this, the concept of nation, the concept of modern nationalism spread all over the world. Point of legacy number 3. The Revolution of 1789 in France spread the seeds of democratic values, democratic ideas, democratic concepts, democratic
key points in all over the world. People started talking about rights of citizens. Point of legacy number 4. Freedom fighters of India got influenced by the values inculcated by the French Revolution of 1789. The first important person who got influenced by the Revolution of 1789 was Tipu Sultan. Later on, Raja Ram Mohan Roy, the father of Indian Renaissance, was also influenced by the values of the French Revolution of 1789. These two persons from India, when got inspired by the ideology of the French Revolution of 1789, they tried their best to spread the values, to spread the slogan of equality, liberty, and fraternity in India. Point of legacy number 5. The other kingdoms in Europe. The people in the other kingdoms in Europe started a revolution against their monarchs to become nation state, to become republic, to become democratic. So, my dear students, a very frequently asked question is, explain the points of legacy of the French Revolution of 1789. I hope the 5 points of legacy of the French Revolution of 1789 are clear to all of you. Thank you very much. God bless you all.